गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सारे गुड्स आपके लिए, सब बोल दो। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारे हेलोज एंड ओला वो भी बोल दिया। चलो, आई थॉट कॉन्टिनेंटल भी हो जाए थोड़ा थोड़ा। और गुड डे। आपको पता चलेगा मैंने ये क्यों बोला, बाद में पता चलेगा। तो हाउडी और गुड डे ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं आज के शो के लिए। एनीवे, तो आज वीकेंड का वार, सेकंड दिन था, संडे पे सलमान खान बहुत खुश लग रहे थे। आज ज्यादा रुबीना और अभिनव को उन्होंने तड़पाया नहीं। वैसे तो ये वीकेंड का वार एक ही दिन पे शूट होता है, इसलिए वो कपड़े बदलते नहीं है। पहले होता था कि वो 2 बार कपड़े बदल देते थे ताकि लगे कि सैटरडे संडे को ये शूट हुआ है। अब तो उन्होंने वो सब छोड़ दिया। अभी कौन डिजाइनरों को इतना देंगे कि भाई हमें 2-2 कपड़े दे दो ताकि हम उसका नश नश करके आपको वापस करें टास्क के जरिए। तो आई एम श्योर के डिजाइनर्स भी कह रहे हैं कि तौबा तौबा, बिग बॉस में कपड़े तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर पहना दिए 5 मिनट के लिए, उसके बाद कुछ ना कुछ गिर जाएगा उसके ऊपर, चीड़ फाड़ हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आई फील फॉर द डिजाइनर्स। पर आज हमारा स्पेशल एपिसोड है। ये एपिसोड कौन सा एपिसोड है बताओ? ये है हमारे व्यूअर्स विनिंग कंपटीशन का एपिसोड है। तो मेरे साथ आज दो दो, एक नहीं, दो दो व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ करेंगे रिव्यू। सो उनसे उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा एपिसोड के ऊपर थोड़ी झलक डालना चाहता हूँ। आज एक टास्क हुआ था, चाट किसको क्या किसने खिलाया। इसमें ये मिर्ची चूरी टोटा टोका का मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फिलर। मुझे फील हो के थोड़ा फिलर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ टास्क दे दो। पहले गुलाब जामुन खिलाए, वहां पे इश्यू हो गया। फिर ये खिलाने का जो नया टास्क डालने का शायद उनका नया कोई क्रिएटिव है कि उसको भूख बहुत लगती है, तो वो टास्क वो खाने वाला ही बना देते हैं। एनीवे, सो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ जो जीत के आए हैं कंपटीशन। तो वे देवोलीना और अली करते हैं एक टॉक शो, और वहां पे टॉक शो में बहुत बातें होती हैं। रुबीना की राहुल की फ्लाइट के ऊपर चढ़ना, एस के सपोर्टिंग एजाज खान, जो सलमान कहते हैं कि नहीं, मैं तो सलमान खान तो नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता एजाज खान को। क्या जिसके साथ वर्क विद हिम, व्हाट डू यू मीन? मतलब कभी भी उनको कभी बैशिंग किया है? जितना उन्होंने किया है घर के अंदर, कभी उनको कुछ भी बोला गया है जिस तरीके से अभिनव और रुबीना को बार बार बोला जाता है? प्लीज, आई मीन, वी कैन सी ऑडियंस। ये बात अभिनव ने कही थी इसी एपिसोड में कि ऑडियंस को सब पता है, वो डम नहीं है। और वही तो बात है, ऑडियंस आज की डेट में उतनी डम नहीं है कि भाई के बस जो आप बोल दो हम वो ही मतलब समझ लेंगे कि यही हकीकत है। हमारे पास भी दिल और दिमाग है, हम भी उनको इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि घर के अंदर असली क्या हो रहा है और आप हमें क्या बता रहे हो। एनीवे, मुझे फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। जैस्मिन से ज्यादा वोट मिलके अभिनव एरोगेंट हो गया है। हाँ, ऐसा हुआ। आई मीन रियली, मतलब रियली अली, आपको अभी भी वो प्रॉब्लम है? आई मीन कम ऑन। पर अभिनव ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे। फिर एसके ने सजेस्ट किया कि राखी को हग करना चाहिए। आई मीन इट्स नॉट इवन फनी, नो मीन्स नो। फिर ये राहुल वैदिया, आई वॉन्ट टू मैरी रूबीना, ये तो हमें पता था कि रूबीना को वो पसंद करता है। उसको ये बात पच नहीं रही कि वो इतना सुंदर कपल है। वो भी चाहता है कि वैसे बोला गया था ना कि मैं भी चाहता हूं कि वो तो अली और जैस्मिन के ऊपर बोला गया था, पर वो बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जब राहुल ने बोला था कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसे हाथ पकड़े, और तो फिर उसके बाद वो जब वापस आया तो फिर उसने वो मैरिज का जो पूरा क्या कहते हैं प्रपोजल किया था। I can see through you, you're like Mr. Invisible. निकी के बहुत सीधे आंसर्स थे। निकी सबसे बदतमीज औरत है बिग बॉस की हिस्ट्री में, ये बोला गया है। रियली वो सबसे बदतमीज है? I don't think so. Sorry, I'm gonna say it. फिर रोनित आए थे, उसके बाद विकास की फैमिली की स्टोरी बताई गई, ये है वो यहाँ पे नहीं आना चाहते, पर वो ही सबसे लोएस्ट वोट थे। अभी उसके पास जोकर कार्ड था, पर वो इतना महान है कि वो जोकर कार्ड नहीं यूज करेगा। समझ गए? आई मीन
क्या वो इनसाइडर स्पाई लग रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को लगता है कि वो इनसाइडर स्पाई है या कुछ ऐसा हो सकता है? What do you feel? Let me know in the comments. Um, anyway, अरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभिनव ने जो अली ने बहुत सारा कुछ बोला था कि फेकनेस चेंज हो गए हैं, जो भी है यार, बहुत कुछ बोला गया था। उससे पहले कि हम माइनस छोटे छोटे पॉइंट्स में पहुंचे, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द विनर्स ऑफ द कंपटीशन एंड द विनर्स यानी व्यूअर्स जो देखते हैं यही शो। एक है ब्री, तो एक है प्रशांत। I hope I got that right because I'm so bad with introducing people. But hi Bree. Hi. Welcome, welcome. आप कहाँ से हो? कहाँ से आप लाइव आ रही हैं? Thank you. I'm from Tampa, Florida. Tampa, Florida, यानी कि United States of America से? हाँ. वाओ, तो वो तो ट्रम्प का वो था ना, अब ट्रम्प की राज हट गया है, अब बाइडेन आ गया है। थैंक गॉड। Yes, of course. Thank God Trump चला गया. No more Trump. नो मोर ट्रम्प, अब ट्रम्प नहीं चाहिए। नहीं। ट्रम्प हो गया ट्रम्प। उसका ट्रम्पेट बज गया और वो निकल गया, थैंक गॉड। पर शायद 4 साल के बाद वापस भी तो आ सकता है ब्री। नहीं। I think Kamala might have a good chance. कि वो कमला Yes. आपने नोटिस किया है कि कमला जो है वो मतलब हाफ अफ्रीकन डिसेंट है, हाफ वो साउथ एशियन डिसेंट है, पर अब सब बस उसको जो हिंदुस्तान में है वो सब उसका हिंदुस्तानी पार्ट ही देखते हैं सबसे ज्यादा, राइट? Yes, पर वो ज्यादा she connects to both the black community as well as the Asian community. Oh, that's good to know that. पर आई थिंक जो ब्लैक कम्युनिटी के होंगे वो ज्यादा उसको अपना मानेंगे, जो साउथ एशियन होंगे वो भी उसको ज्यादा मानेंगे। तो मतलब इतने सारे लोग अगर उसको पसंद करें तो ये बहुत अच्छी बात है। Yes. पर चलो बिग बॉस के ऊपर आते हैं। बिग बॉस ने आपने देखा है आज का एपिसोड? आज का मैंने ऑलमोस्ट देखा है until विकास got evicted. तब तक अच्छा ठीक है, विकास के बाद तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस अभिनव और रुबीना बेड पे लेटे होते हैं। वहां पे अभिनव उसको समझाता है कि आपको ज्यादा अपना ये जो स्टैंड जो आप लेती हो सही होने की, या जो सरमन देती हो वो आप कम कर दो। और वहां पे उनकी भी थोड़ी सी हल्की सी अनबन हो जाती है, जहां पे वो बीच में कोई जोक मारती है, उसको अभिनव को पसंद अर्शी के बारे में। तो लेट्स ब्रिंग इन द नेक्स्ट विनर ऑफ द कंपटीशन, प्रशांत। नमस्ते। नमस्ते एंडी, हाउ आर यू एंड हाउडी? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ। मैंने आज ना बहुत सारा मेकअप पहना हुआ है, क्योंकि पता क्या, मैंने कल एक शूट किया था और मुझे ना उन्होंने दाढ़ी मुनवा दी मेरी, और उसके बाद जो 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 मेकअप से ना मैं थोड़ा स्किन को अच्छा कर लिया यार। पता नहीं मेरा तो ब्रेकआउट हो गया कुछ। मैं वाज लाइक आई गॉट टू गेट सम मेकअप ऑन टुडे एंड आई हैड टू डू इट, एंड नाउ आई एम लाइक आई एम फीलिंग बेटर। You know what, बट Andy? हाउ, You're वेयर getting आर यू skin फ्रॉम? वेयर आर goals. यू फ्रॉम प्रशांत? आप कहाँ से बात कर रहे हो? Andy, I'm from Melbourne, Australia. ओहो, And this, हाउडी। हाउडी नहीं होता, गुड howdy, डे। howdy. Howdy होता है, howdy होता हाउडी है, भी good होता है? day. अच्छा, Howdy दोनों होता होते है। हैं, चलो। Australians are the most laziest English speakers and Canadians are the most वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन सेंटेंस को जोड़ देते हैं। सो से सपोज इफ आई एम सेइंग हाउ यू डूइंग, दे विल से हाउ यू डूइंग माइट, हाउ यू डूइंग माइट। सो जब मैं शुरू में आया था तो मुझे हाउ यू डूइंग मेट। तो जब मैं शुरू में आया था तो Are मुझे you बात born and bred, Bree, are you born and bred in the US? I moved here when I was 13, so almost grew up here. Right, understood. So you kind of grew up, yeah, you've grown up in the US. So you're more USian. And Prashant, आप यहाँ से मतलब हिंदुस्तान से गए थे या फिर आप वहां पे जन्मे पले हैं? एंडी, मैं दिल्ली से हूँ, पक्का दिल्ली दिल्ली वाला से हो? हूँ। आप दिल्ली वाले हो? And I came here like 6 years ago. Yeah, 6 years ago to study, and then I'm settled here. I'm an engineer. अच्छा, अब बल्ले तू ता जाके बड़ा ठीक हो गया। ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਬਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? There's lots of that Australia. happening, though. I guess a lot of people are migrating from India to places like the Exactly. US and Australia, UK. I mean, my mom and dad. Well, no, my mom is a immigrant, if you like.
but my dad was from here. So yeah, so let's talk about आज के एपिसोड के ऊपर आते हैं. आज प्रशांत आप बताइए कि आपको पहला मुद्दा कौन सा पकड़ना है. मेरा था कि चार्ट के ऊपर कुछ बोलेंगे, जो चार्ट का हुआ था किस्सा. Andy, chart से ज़्यादा, and your video is frozen. मेरा वीडियो फ्रोजन है, आपका वीडियो फ्रोजन है. Oh my God, we're frozen. But I got Bree. Hi, Bree. Hi. Bree अभी तक है मेरे पास. Hello. अरे ये ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेट कितना बुरा है. Very bad. USA UK चल रहा है. Hi, Bree. प्रशांत आप Oh, फिक्र ना that's करें, sad. अगर That's आपका कनेक्शन लूज है या That's फिर sad. You know what, Andy? I'll just connect. I'll let you back in. Don't worry. If it gets disconnected also, you can restart it and come back. But till then, let's talk to Bree. So Bree, तो आप बताइए कि सबसे पहले let's talk about the chart वाला सीन जो हुआ था. वहां पे आपको कुछ लगा, कोई मेन पॉइंट्स पकड़ने के लिए जो आपको अच्छे नहीं लगे या अच्छे लगे? Honestly, मुझे genuinely लगता है कि I thought कि राखी would turn around after she उसने sorry कहा अभिनव को कि वो turn around करके she'll change, पर उसने जब chat वाले scene में when she started speaking तो उसने like she venom spill करना शुरू कर दिया, and जितना उसने बोला है रुबीना के against उस time पे I thought कि उसने वो chance लेके शायद वो mend कर सकती थी अपना equation, पर उसने नहीं करा. बट अदर देन दैट मुझे इतना कोई खास नहीं लगा ऑनेस्टली आज का एपिसोड, बिल्कुल भी चार्ट वाला सीन जो था. अदर देन दैट मुझे लगा कि निकी ने जो कहा था देवोलिना के लिए, आई थिंक कि उसने उसको ज्यादा बोलना चाहिए था, पर वो इतनी मेलो डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ द बैकलैश कि वो नहीं बोल पाई, बिकॉज देवोलिना ने उसको बहुत खराब चीजें बोली थी, लाइक बूटी शो करो अपने बॉयफ्रेंड को एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो अगर वो पॉइंट आउट करती तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट, पर वो इतनी सहम गई थी बिकॉज ऑफ द बैकलैश कि वो नहीं बोल पाई. दैट्स प्रशांत आप बताइए, ये जो निकी का जो सिलसिला हुआ है, अच्छा वो चले गया वापस, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ. देखो मुझे भी लगा कि जो निकी का जो पूरा ये बताया गया है कि वो सबसे बदतमीज है, वो वो बहुत ही बुरी तरीके से जो भी कर रही है उसको बिल्कुल डाउन करा गया है. और क्योंकि वो पूरी तरह से वो टूट चुकी है अंदर से, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि जब उसको पहले दिन से बोला गया कि जो उसकी एंटिक्स थे कि वो पहले तो बहुत अच्छे थे, जब वो रुबीना अभिनव के अगेंस्ट थी तो बहुत अच्छे थे भाई, पर अब वो रुबीना और अभिनव के साथ हो गई है, जो वो सेम चीजें कर रही हैं वो ही सबसे बुरी मानी जा रही हैं. तो वो बिल्कुल वो बच्ची है. एक तो बात ये है कि वो 23 इयर्स ओल्ड है, तो वो नहीं समझ पा रही है सब. और जब एक बंदा जो सलमान खान, एक बड़ा बंदा ऐसा उसको बोलेगा कि तुम्हें बाहर काम नहीं मिलेगा, वो तो डर चुकी है पूरी तरह से कि क्या ये हकीकत है, क्या मैं अब बाहर जाऊंगी, मेरी करियर बिगिनिंग से ही खराब हो जाएगी. तो ऐसे आप बच्चे को ऐसे आप बोलोगे तो कैसे चलेगा? प्रशांत आप बताओ. Andy, I totally agree. And Nikki was in the toilet and she was saying, she actually said something very serious. वो बोल रही थी कि मेरा तो मन करता है मैं सिगरेट के चटके लगाऊं, basically, to hurt herself, to make her feel better. And I think it's very serious. और पूरे एपिसोड में वो कुछ नहीं बोल रही थी, and she was just blank face और answers because it's required to. She's a contestant, वो कर रही थी. But I agree with you, वो बहुत young है सभी से, तो आई थिंक थोड़ा उसको लीवे देना चाहिए एंड इंडिपेंडेंटली खेलने देना चाहिए उसको. शी वाज वन ऑफ द वेरी गुड कंटेस्टेंट्स. अगर वो बाहर नहीं जाती वोट्स के लिए, वोट्स की वजह से, तो बहुत अच्छा खेलती है. शी मैनूवर्स वेरी वेल, जस्ट लाइक अर्शी. निक्की मैनूवर्स वेरी वेल. लाइक वो दोस्ती कर लेती है एंड फिर फ्लिप मार देती है, बट वो शी यूज्ड हर चार्म एंड ब्यूटी टू अपनी साइड कर लेती है लोगों. So I feel I felt very sad for her, and it's not just related to the game, but just as a human being.
I agree with you. जिस तरीके से हमने देखा कि निकी को जो बोला गया है वो बिल्कुल ही मुझे तो नहीं लगा था कि वो एक्यूरेट है। हाँ, वो बदतमीजियां कर रही हैं, पर उस सामने से जो बंदा बदतमीजी कर रहा है वो वापस रिएक्शन में करती है बदतमीजी। वो ना कि किसी के पास जाके लड़ने के लिए निकलती है कि बस मैं अभी इससे बदतमीजी करूंगी। जब कोई उससे सामने से बात करता है तब ही वो रिप्लाई करती है। और वो भी मतलब उसका जो है कि मैं ऐसी ही हूं, डे वन से ऐसी रही है। अब उसने अपने आप को बदला नहीं है किसी के लिए। अब उसको बोला जाएगा कि भाई तुम अब गलत हो, तो वो कहां से समझ पाएगी? वो रुबीना और अभिनव नहीं है, वो इतने समझदार नहीं है उनके जैसे। वो समझ लेते हैं कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, शायद हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे चुप करना चाहिए, यहाँ पे समझ लेना चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए। वो निकी के अंदर वो चीजें अभी तक हुई नहीं है, वो मैच्योरिटी लेवल आया नहीं है। And it's not a bad thing. I'm not trying to say it's a bad thing, but I'm just saying that she just needs a little bit more help. And if you're, and जिस तरीके से आपने पॉइंट आउट किया है कि मेंटल लेवल पे निकी ने बोला कि मुझे सिगरेट से चटके लगाने अपने आप को, तो दैट मीन्स शी wants to self harm, which means if she is getting into that level of mental torture, which means the question then comes कि is Big Boss getting too far in the mental torture of the contestants? What do you think, Bree? Yes, of course it is. Actually tweeted about it कि अभी तो sexual harassment को entertainment की तरीके से pass किया जा रहा है. That is extreme. I wouldn't be surprised कि इससे भी आगे कुछ चीजें करे entertainment के लिए. Especially mental health. It is very debilitating for other people. जैसे अभिनव को या रुबीना को कितना पुट डाउन किया जा रहा है, तो मेंटली, और उनको बाहर की कोई आइडिया नहीं है, तो इट्स रियली हार्मफुल फॉर देम मेंटली. बट एट द सेम टाइम अली गोनी का अग्रेशन या एजाज खान का अग्रेशन है, उसको कुछ भी नहीं कहा जा रहा. निकी को बोला कि शी वाज एक्सट्रीमली रूड टू द प्रेस, पर हेलो, पॉइंट आउट अली गोनी कितना रूड था टू दैट वुमन. Amazing. या Amazing. राहुल He actually he threatened her in the end, saying कि आपसे बाहर आके मिलूंगा. हंस के बोला, पर actually that was threatening. तो यही तो फितरत है अली गोनी की फितरत है कि वो हमेशा बुली करके धमकियां देता है, चाहे वो खाली धमकियां होती हैं, पर वो धमकियां देता है. और उस दिन उसने प्रेस वालों से भी बहुत बुरी तरीके से पेश आया. आई एग्री विद यू, पर किसी ने उसको कुछ नहीं बोला. क्यों? I think because makers, I have a theory that makers see him as an antagonist. वो उसे एक ग्रे नेगेटिव कैरेक्टर में देखना चाहते हैं शो में. जैसे शो की कास्टिंग हो तो रुबीना इज द हीरोइन, अभिनव इज द हीरो, सो अली इज दैट नेगेटिव कैरेक्टर. ही ब्रिंग्स आउट रिएक्शंस फ्रॉम पीपल. तो आई थिंक उसको ना वो कुछ बोल एनकरेज करते हैं ना डिस्करेज करते हैं. दे जस्ट लेट हिम बी. ही इज डिस्ट्रॉइंग हिज ओन इमेज ये सब करके, बट उसको बोला नहीं जाता. और दूसरी बात ये कि ही वाज सेइंग इन द लाइव फीड लाइक लॉन्ग बैक के आई डिडंट वांट टू कम टू द शो व्हेन दे वर ट्राइंग टू कॉल मी फॉर जैस्मिन, लेकिन मैंने अवॉइड करा. फिर ना भाई का फोन आया, तो एग्जैक्टली सो ही एक्चुअली सेड दैट के, तो इसका मतलब उसकी बाहर एक रैपो है सलमान के साथ. एंड आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर टुवर्ड्स अदर कंटेस्टेंट्स, स्पेशली इन सिचुएशंस लाइक दीज, जब उसको एक डांट मिलनी चाहिए, नहीं मिली. ओपनली धमकी दे रहा था. प्रशांत से बार-बार हो रहा है कि अली बहुत कुछ करता है घर के अंदर, पर जब उसको डांट मिलनी चाहिए, फिर सलमान उसके ऊपर भाई भाई में उनकी एक इश्क प्यार वाला लव में निकल जाता है कि अरे भाई भाई मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था, भाई भाई. फिर वो बिल्कुल बदल जाता है. जो अंदर उसने गंद मचाया है उसके ऊपर कुछ नहीं बोला जाता, बस भाई भाईचारे में निकल जाता है पतली गली से. एंड ये बार बार हमने देखा है कि आई थिंक जब वो बुली गैंग बन चुकी थी कविता के साथ, वहां पे बार बार वो बचा था. कितनी बार उसको कुछ नहीं बोला गया था. I switched my support to Kavita. I like Rubina, but I switched my support to Kavita when she was giving it everything she has to Ali. वो अली से एकदम कोई बुलशिट लेने के लिए तैयार नहीं थी. एंड आई लव कविता बिकॉज ऑफ हर शो एज वेल एंड बिकॉज ऑफ हर पॉलिटिक्स एंड व्यूज एज वेल ऑन ट्विटर. वो बिल्कुल नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती, तो उसे फर्क नहीं पड़ता. कविता की तो अलग बात है. ऑनेस्टली आई नो कविता पर्सनली. आई हosted a show with her and all, and
पर ऑनेस्टली आई मीन कविता का जर्नी कुछ अलग है. लेट्स नॉट गेट इनटू कविता because she's left now. But yes, at the time when she was fighting with Ali, I was on Kavita's side 100% because it was a bully gang against her. Now as soon as I wanted her to fight with, मैं चाहता था कि रुबीना, निकी और ये कविता एक साथ हो जाएं, वो त्रिदेवियां बन जाएं और वो सबका मतलब यू नो अच्छे तरह से लें. पर वो नहीं हो पाया क्योंकि कविता और रुबीना का तो मतलब कुछ मतलब वो नहीं होते, वो पटाखा नहीं होता, इधर जाते जाते इधर हो जाता है. तो मतलब वही हुआ वहां पे. बट लेट्स कम बैक टू द शो टुडे. तो डेवोलिना और अली ने एक टॉक शो का सेगमेंट किया था, इंटरव्यू सेगमेंट किया था, और वहां पे ये पता चल रहा था कि उनके हाथ में कोई ना कोई कार्ड्स थे, पता चल रहा था वो क्वेश्चंस थे वहां पे. तो इससे पहले भी हुआ है, रुबीना ने जब वो रेडियो शो किया था, द रुबीना शो, क्वेश्चंस भेजे गए थे अंदर, गेस्ट लिस्ट भी दी गई थी. So then, they're kind of scripting it a little bit क्योंकि they're giving you an idea of what they want you to do, right? तो आज भी डेवोलिना और अली को पोस्ट कार्ड्स मिले थे, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे गए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं. तो उनके ऊपर आते हैं. तो पहले लेट्स आस्क रुबीना, क्या आपको लगता है रुबीना ने राहुल की फ्लाइट पकड़ी है? जिस तरीके से प्रेस वालों ने बोला था कि प्रेस वालों ने, जो जनता की आवाज है, उन्होंने बोला था कि राहुल रुबीना एयरलाइंस के ऊपर चढ़ के टॉप 2 में पहुंचने की कोशिश कर रहा है. आज उसको उल्टाने की कोशिश हुई थी. व्हाट डू यू थिंक, ब्री? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि राहुल का रुबीना के साथ कोई भी आज तक पर्सनल इशू नहीं हुआ. वो जाके मुद्दा बनाता है. ही वांट्स टू गेट इनटू, जब रुबीना का किसी और के साथ भी झगड़ा हो, वो जाके बीच में घुसता है और उसको अपना मुद्दा बनाता है. तो रुबीना नहीं करती वो राहुल के इश्यूज में. राहुल जब किसी के साथ फाइट करता है, रुबीना जाके बीच में राहुल को, लाइक शी डजंट स्टार्ट गेटिंग इनटू अ फाइट विद राहुल, पर राहुल वो करता है. तो डेफिनेटली राहुल रुबीना की फ्लाइट पकड़ता है, रुबीना नहीं पकड़ती, फॉर श्योर. What about you, प्रशांत? आप क्या सोचते हो? एंडी, आई थिंक मैं फ्लाइट की एनालॉजी से हटके ट्रेन पे जाऊंगा. रुबीना इज द इंजन और उसके पीछे राहुल ने अपना कैरेज लगा लिया और उसके पीछे अली ने लगा लिया है. तो आई थिंक यहाँ सीन ये चल रहा है और उसको बोला जा रहा है कि ड्राइवर कौन है? अभिनव? ड्राइवर तो वो खुद ही है. खान ही लगता. नहीं, आई थिंक आपकी एनालॉजी पकड़ के अभिनव इंजन है, ड्राइवर रुबीना है. सबकी गाड़ियां ऐसे शायद. I don't know, like I'm not trying to. Yeah, Abhinav and Rubina, they are actually a very good couple. They both switch brains very swiftly and nicely. जब कुछ टास्क आता है तो किसी टास्क में रुबीना अपना बहुत दिमाग चलाती है. अभी साइकिल वाले में अभिनव अपना दिमाग चला रहा था. तो वो करते हैं ये. हाँ, आई थिंक हाँ, ये पॉसिबल है कि वो दोनों ही हो सकता है, इंजन हो एक पीछे हो एक ट्रेन के आगे हो, एंड दे आर टेकिंग द शो फॉरवर्ड. पर राहुल तो, पर देयर इज नो सच थिंग एज राहुल फ्लाइट. कभी होगी भी नहीं. हाँ, उसकी कोई फ्लाइट ही नहीं है. तो कौन खरीदे, कौन उसके ऊपर आके बैठे, कौन सिक्योरिटी लाइंस में खड़े. अली के साथ रिक्शा में घूम सकता है मुंबई में जितना चाहता है, पर फ्लाइट में तो नहीं. अच्छा, तो राहुल का रिक्शा है. बट देखो, राहुल का रिक्शा बहुत जरूरी होते हैं. बिल्कुल जरूरी होते हैं, बिल्कुल जरूरी होते हैं. अगर रिक्शा ना होते हैं ना, जब हम घर से नीचे आते हैं तो पहले रिक्शे पकड़ते हैं. वो कभी मत भूलना कितना इंपॉर्टेंट होता है. That's what I miss in Australia. कुछ है ही नहीं आता है, पैदल जाना पड़ता है. पता चल रहा है ना कि रिक्शा वाले, अब पता चल रहा है तुम्हें. हमारे यूके में, लंदन में रिक्शा होती है, पर वो इतनी महंगी है ना, उससे बेटर तो टैक्सी ले. सेम हियर. Uber is cheaper than the rickshaw. तो ये बात जो ये हमने शायद इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की है कि सलमान खान को कहीं ना कहीं, नहीं, रुबीना को पूछा गया था कि आपने प्रेस वालों को बोला कि आप अग्री करती हैं कि सलमान एजाज के पक्ष में रहते हैं, और ये इनसे पूछा गया था ऐसे आपने कैसे बोला. तो आपको क्या लगता है, क्या सलमान के बिहेवियर एजाज की और अलग है, उनका पक्षपात करते हैं? व्हाट डू यू फील? ब्री, यू वांट टू गो विद? यस, ऑफ कोर्स करते हैं, हर टाइम करते हैं. कभी उसको बोला नहीं है अग्रेशन ना दिखाओ, कभी उसको नहीं बोला कि मुंह पे जाके बात ना करो. बस उसको एक फनी वे में
सलमान खान उसको इमिटेट करते हैं, टोन इट डाउन करते हैं, या खान साहब करके बात करते हैं, पवित्रा की बात करते हैं, बट ही इज नेवर रेप्रिमेंडेड एजाज खान, नॉट वंस। और एजाज खान ने बदतमीजी की है सारे घर वालों के साथ। निकी को बोलते हैं कि उसने सारे के साथ की है, बट एक्चुअली एजाज खान ने रिपोर्टर्स के साथ भी कितनी गंदी बात की थी, बट एजाज खान ने किसी को भी नहीं छोड़ा घर पे। अली गोनी, राहुल वैद्या, ही इज फॉट विद एवरी सिंगल पर्सन, तो ऑफ कोर्स ही इज फेवरिंग एजाज खान। तो आज एक और बात होती, प्रशांत आपके ऊपर आएंगे, एक और बात हुई है घर के अंदर। आज विकास गुप्ता मतलब वोट आउट हो गए, वोट उनको कम मिले थे, उनके पास जोकर कार्ड था, पर उन्होंने फिर भी वो पावर को नहीं यूज किया, उन्होंने एजाज खान को बचा लिया। तो यहां पे मुझे लगा, मेरे मन में एक बात उठी कि जिस तरीके जितना विकास गुप्ता घर के बाहर अंदर बाहर हुआ है इस सीजन में, छोड़ो दूसरे सीजन, इसी सीजन में पूछे 3 बार हो या 4, मुझे इतना भी याद नहीं कितनी बार हो चुका है, मतलब इट्स अ ब्लर, बट द पॉइंट इज ही कीप्स कमिंग इनसाइड द हाउस एंड गोइंग आउट। तो इसमें जो मर्जी कह लो, जो क्रिएटिव्स हैं, जो भी बिग बॉस की टीम है, उनसे बाहर तो मिलती है ना, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो उनको बिल्कुल ही नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं क्या विकास गुप्ता को ये बोला गया था कि भाई अगर एजाज खान और तुम्हारे के बीच में आएगा तो आप उसको मत निकालना क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। इज दैट अ पॉसिबिलिटी, प्रशांत? आई थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और उस एसके की बात के उसे कौन कुछ नहीं कहता। आई थिंक ही आल्सो नोज के एजाज इज प्लेइंग अ कैरेक्टर, बिकॉज लाइव फीड की कुछ कुछ वीडियोस ना लोग यूट्यूब पे शेयर करते हैं, एंड एजाज इज वेरी चीयरफुल, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है, आई थिंक उसके एक्सपीरियंस उसको पता है वो एक सर्टेन कैरेक्टर में आता है, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। दैट कैरेक्टर में अगर आप वायलेंस करते हो, फेस के पास जाते हो, इंटिमिडेट करते हो, स्टिल नॉट गुड। और विकास की जहां तक बात है, तो अगेन विकास तो पता नहीं कितनी बार अंदर बाहर जा चुका है, तो उसके आई थिंक उसके पास घर की चाबी है, उसको दे रखी है शायद मेकर्स ने कि भैया तू कभी भी या कभी भी जा। हाँ, उसको और अब डेफिनेटली फिल्म उसको ये सिटी से बोला तो होगा रिक्शा ही पकड़ के घर जाएगा। हाँ, रिक्शा बढ़ के डर जाएगा, राहुल भी मिल जाएगा उसे बाद में, थोड़े दिन बाद। तो राहुल या का पता नहीं अभी फिलहाल, पर देखो 3 हफ्ते हैं, वी हैव 3 वीक्स लेफ्ट, राइट? तो 3 हफ्ते में कितने लोगों को बाहर जाना है अभी यार, कितने लोग बसे हुए हैं घर के अंदर 3 हफ्ते में? इनको तो ट्रिपल नॉमिनेशंस में डालना पड़ेगा ना सबको। अभी कितने बाकी रह गए? अभी 8 लोग हैं, टॉप 2 जाएंगे, ठीक है, टॉप 5 को पकड़ लो, चलो 3 लोग नेक्स्ट वीक निकलेंगे फिर, राइट? एविक्शन करेंगे आई थिंक, मे बी। आई थिंक अगर 3 हफ्तों में इन्होंने एक एक निकाला तो कितने बच गए? 6, ठीक है, फिर एक निकाल देंगे, टॉप 5 बना देंगे लास्ट हफ्ते में, तो फिर 5 को निकालेंगे, मतलब यानी कि मतलब 3 को निकालेंगे उसी उसी हफ्ते में ना, मिड वीक एलिमिनेशंस एंड ऑल दैट। तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि जब अली ने बोला था, आपने नोटिस किया है इस वीकेंड के वार पे जैस्मीन का नाम कितना बार बोला गया है, उसको कितनी बार दोहराया गया है, ऐसा क्यों है? सलमान ने बोला था कि जिस तरीके से आपने रुबीना ने आपने जैस्मिन के साथ बुरा किया था, एक्सक्यूज मी, शी वाज स्टिल ट्राइंग टू बी अ फ्रेंड व्हेन शी लेफ्ट द हाउस, व्हाट आर यू टॉकिंग? We'll come to that, but why are they mentioning Jasmine so much? What do you think? आई थिंक हिंट है, क्योंकि यूट्यूब पे और ट्विटर पे देख रहे थे कि कनेक्शन वीक है, तो आई थिंक बोल रहे हैं ऐसे कि जैस्मिन शायद आ सकती है अली के लिए, तो प्रॉब्ली इट्स लाइक अ हिंट कि वो आने वाली है। और दूसरी बात ये, अली का अपना गेम है, वो वायलेंट और वो सब जो करता है, पर वो जैस्मिन को पिगी बैक करते आ रहा था, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भैया अभी तो छोड़ दो उसको, चली गई है बाहर, तूने उसके गेम की वाट लगा दी अच्छे से, ही रेक्ड हर गेम टोटली, तो यू नो ही शुड लीव हर अलोन, आई मीन फॉर द गेम्स सेक, अदरवाइज यू नो। पर अली को कहीं ऑब्वियसली देखो, अली उसका बॉयफ्रेंड है, जो मर्जी कह लो वो है, तो वो उसको बुरा लग रहा है कि वो वो वहां से चले गई है, और वो किसी पहले तो उसने राखी को ब्लेम करने की कोशिश की थी कि उसको दुआ लग गई तुम्हारी काली जबान से, एंड तब जब राखी सावंत ने धोती को फाड़ा था, तब अली कूट कूट के बोल रहा था एक आदमी के साथ, एक मैन के साथ ऐसे हो सकता है। अब नाड़ा खींचा, अब इतना सारा सेक्सुअल हरासमेंट किया, उसके ऊपर राहुल और अली बिल्कुल
चुप हैं, और उनको नहीं पूछा जा रहा कि आप क्यों सही के लिए नहीं खड़े हो रहे, पर रुबीना को बोला जा रहा है कि आपने राखी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, आपने फिर इनफैक्ट कल के एपिसोड में जब सलमान ने पूछा था कि रुबीना सबको कंट्रोल करती है, जब कंट्रोल नहीं रहता तो फिर उनको छोड़ देती है, फिर वो अच्छे नहीं रहते, ये क्या ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे थे? डेफिनेटली फॉल्स नैरेटिव फर्स्ट डे से किया जा रहा है रुबीना के अगेंस्ट, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑथोरिटेटिव, डोमिनेंट, ये सारी जो चीजें रुबीना के लिए कही जा रही है, दैट इज क्रिएटिंग अ फॉल्स नैरेटिव। पर आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए वो इट बैकफायर्ड ऑन द कलर्स टीवी एंड मेकर्स, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो वैसी है, इनफैक्ट वी आर लविंग हर दैट वे। और दूसरी चीज ये है कि जब सलमान खान रुबीना को कह रहे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि रुबीना आपको समझाती है, इफ निकी ने अगर यस नहीं बोला होता, ना बोला होता, देन ही वुड हैव लाइक कंटिन्यूड ऑन बैशिंग रुबीना। पर जब निकी ने फ्लिप करके बोला कि यस वो समझाती है मुझे, तब ही इज लाइक कि तुम राखी को क्यों नहीं समझाती, रुबीना नहीं, ऐसा बोला था कि उसको आपने अलाउ किया अलग जाके उसको बात करने का, तो ऐसा तुमने राखी के साथ नहीं किया। राखी के साथ क्यों नहीं किया? जो कुछ भी बोल रहे, हाँ या ना, दोनों तरफ से बजाएंगे तो सिर्फ रुबीना को बेसिकली। एग्जैक्टली। एंड ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बोला है, आई एम सॉरी जंपिंग इन, बट बहुत सारे लोगों ने बोला है कि रुबीना और अभिनव को इतना बैश करा गया है, बिन वजह बैश करा गया, क्योंकि जब बैश करते हैं हम सब में वो एक खून खोलता है, और फिर हम ज्यादा कुछ उनको ट्विटर पे करते हैं, वहां पे ट्रेंड्स होते हैं, वहां पे वोटिंग ज्यादा होती है, तो क्या ये टीआरपी का गेम है? यस आई थिंक इट इज। ये पूरा ऑडियंस एंगेजमेंट का पूरा आई थिंक इट्स अ प्रॉपर प्लान, बट अगेन रुबीना इज स्मार्टर टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो रहा है। आई थिंक शी रियलाइज्ड इट नाउ, बट निकी को ऐसा नहीं पता, या फॉर एग्जांपल समबडी एल्स कांट थिंक दैट वे, तो वहां नुकसान ज्यादा है। पर रुबीना को ये पता लग चुका है अभी, एंड जिस तरह वो रैपिड फायर पे आंसर्स दे रही थी, शी वाज जस्ट चिलैक्स टोटली, और उसको ये पता है कि अब ये रुबीना शो बन चुका है पूरा। पर हाँ, उसको पर हाईलाइट करने के और तरीके भी होते हैं, लाइक दे कैन से दे कैन, जैसे आप यू आर टेलिंग एंडी कि उसको स्पॉन्सर्स दे वांट हर टू डू टास्क्स, या रुबीना से ही टास्क पढ़वाते हैं, तो दोज आर आल्सो द वेज कि आप हाईलाइट कर सको। हमेशा नेगेटिव बोल के या नीचे गिरा के हाईलाइट करना, आई डोंट एग्री विद दैट। और पर अगेन वो रिएक्शन, बिफोर यू फिनिश, द थिंग इज ऐसे उनको ना अंडरडॉग बना रहे हैं, ताकि जब वो जीतेगी ना तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमने उसकी तरफदारी की। दैट इज करेक्ट, इट्स नॉट, या ये तो gonna be the heroine from day one, which she is, but if she's going to be for the makers also, and then she wins, then it's like it's a bias show. What's the point of watching? So there's always a double-edged sword in these situations, so they've got to take into consideration. I feel for the makers. In fact, I know the makers. Let's face it, I know them. But I feel for them because we are always going, makers ने ये किया, makers ने वो किया, पर वो एक टीम है जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम करती है, एक टीवी चैनल जो पैसे बनाता है. Let's stop forgetting this for a second. I think we lost brief when she'll come back. Whenever she comes back, we'll let her back in. So मुझे लगता है कि ये जो पूरा सिस्टम है, it's a money making system. It's a business. तो at the end of the day, अगर वो कुछ कर रहे हैं, पर मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि जो हिंदुस्तान के लिए सही रोल मॉडल्स हैं, सही बातें बताना चाहिए, हिंदुस्तान को छोड़ो पूरी दुनिया में। देखो, मैं लंदन में बैठा हूं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, ब्री अभी यूएसए में है, अभी आएगी वापस तो उससे भी बात करेंगे, पर this show is going international, right? So what are you teaching our next generation? That is the most important thing than making money, than making Twitter trends, than making TRP. What's more important is what is the message of the show? What is it reaching to our children? आज की डेट में छोटा छोटा बच्चा गलियों में नल्ला नल्ला सस्ता सस्ता बोल रहा है। क्या हमें ये चाहिए हमारे हिंदुस्तान के लिए? What do you think, प्रशांत? I never heard that word नल्ला, मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं जब तक मैंने शो नहीं देखा, तो मेरे पे भी इम्पैक्ट पड़ा कि मुझे एक ऐसा घटिया वर्ड सीखने को मिला, मुझे बिल्कुल नहीं सीखना था। और दूसरी बात यह, हमने बहुत
इंडियंस रिएक्टेड वेरी बैडली जब शिल्पा शेट्टी के साथ रेसिज्म हुआ था यूके बिग ब्रदर में। तो अपनी कंट्री में वी पुट अ ब्लाइंड फोल्ड टू इश्यूज, बट दूसरी कंट्री में हमें कमला हैरिस को इंडियन भी बोलना है, पर राहुल गांधी मदर इज फ्रॉम इटली, सो हमें उससे प्रॉब्लम है, बट कमला हैरिस इंडियन है तो हमें वो चलेगा, वील टेक पार्ट इन इट। और तो ये बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एंड देन सम पीपल से कि यार अब ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे शो पे कि रोल मॉडल देना उनका काम थोड़ा ना है। पॉलिटिक्स की बात करते हैं तब भी यही बोलते हैं, फिल्म्स की बात करते हैं तब भी ये बोलते हैं, तो फिर रोल मॉडल निकलते कहां से? रोल मॉडल सोसाइटी से ही तो निकलते हैं। एंड सोसाइटी में शो भी है किस्सा जो उसका भी है एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। बिग बॉस है, बिग ब्रदर से ही लिया है ना, ये बिग बॉस का Yup. शो बिग ब्रदर है, राइट? यूके में, Yup. यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में भी बिग ब्रदर कहा जाता है इसको। और उसका बिग ब्रदर ऑस्ट्रेलिया, उसका एक दायरा होता है, उसके असूल होते हैं। वहां पे आप एक दूसरे को अब्यूज नहीं कर सकते, आप हाथ तक नहीं लगा सकते एक लगा दूसरे सकते को। हैं। तो Yes. ये सारे रूल्स को बहुत लूज करा जाता है चंद चंद कंटेस्टेंट्स के लिए। क्या ये सही है? ब्री, यू वांट टू टेक इट? यस, डेफिनेटली नहीं सही है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो गई है बिग बॉस के साथ, ये वो हो गया है कि पहले स्टार्ट किया था कि सलमान खान वुड बी द मोरल पुलिस एवरी वीकेंड, पर अब क्या हो गया है कि वी यूज टू लव इट जब वो ही वुड बैश जो गलत जा रहे हैं उनको, पर अब क्या हो गया है वो सिलेक्टिवली बैश कर रहे हैं। अगर वो सबको इक्वली बैश करते, रुबीना को बैश करते, अली को बैश करते, सबको इक्वली बैश करते एज एन अनबायस्ड होस्ट, तो इट वुड हैव बीन लाइक ओके। अब क्या हो गया है कि टू गेट द टीआरपी शो के लिए, जैसे मुझे लगता है जेन्युइनली कि दे आर गियरिंग अप फॉर द फिनाले, और इसलिए इस वीकेंड भी अभिनव और रुबीना को इतना बैश किया सो दैट दे कैन गेट एंगेजमेंट। और पर आप क्या कर रहे हो कि टीआरपी के चक्कर में आप हरासमेंट को एंटरटेनमेंट का नाम दे रहे हो, सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू बी अ मॉरल पुलिस, पर आप क्या कर रहे हो, लाइक यू आर जस्ट एक्चुअली लुकिंग लाइक अ हिपोक्रेट वहां पे। मुझे ये एब्सोल्युटली राइट। ये मॉरल पुलिसिंग छोड़ दो, क्योंकि मॉरल पुलिसिंग भी गलत है। जैसे कि आप रुबीना को भी बोल रहे हो कि आप बहुत अपने भाषण दे रही हो, आपको भाषण देने का कोई हक नहीं है, आप भी गलतियां करती हैं। ऐसे तो फिर एसके भी गलतियां करते हैं, उनको भी भाषण देने का कोई हक नहीं है। फिर तो कलर्स टीवी भी गलतियां करते हैं, उनको भी भाषण देने का हक नहीं है। तो सब भाषण छोड़ दें ना, फिर क्यों भाषण दे रहे हो टीवी पे, अगर आपको लगता है दूसरे को नहीं देना चाहिए? ये चीज सेम लागू होती है रुबीना और राहुल के हमेशा जो कॉन्वर्सेशन है, तुम कौन हो मुझे बोलने वाले, तो ये तो सब पे लागू हो सकता है ना। फिर तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम तीन, हम अपना राय रख रहे हैं, हमारा ओपिनियन दे रहे हैं, पर ये मैं कभी नहीं बोलूंगा कि जो मैंने बोला है वो ही सही है। और अगर आप कुछ बोलेंगे जो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा, एंड आई विल लाइक, इज दिस राइट? And then I will adjust myself if I feel that I'm wrong. And I will do it instantaneously, like I did in my season. मुझे बोला गया है बहुत बार, मतलब ये ट्विटर पे बहुत लिया गया है कि जब मैंने राखी सावंत के ऊपर बोला था कि उन्होंने अंडरवेयर को लेके फाड़ने की कोशिश की, अच्छा नहीं लग रहा है कि चीपनेस में चले गया है, तो मुझे मेरे सीजन से बोला गया कि आपने भी तो ऐसा ही कुछ किया था। मतलब मैंने अपने सीजन में, शायद आपने नहीं देखा होगा, आई डोंट नो, बट मैंने गौर खान की ब्रा लेके मैंने उसको दिखाई थी एक मजाक में, and I'm just telling you straight up, and I just thought it was funny because that's the kind of relationship we had. We joked about these things. It was never a big thing, but then I understood कि ये नेशनल टेलीविजन पे हिंदुस्तान में ये बहुत बुरा लग सकता है। वो 5 मिनट थे, 5 मिनट का मजाक मैंने फिर वो वापस रख दी थी सीधा, like it was literally in 5 minutes, and that is, जब वो लड़की थी उस टाइम पे, मैंने उसको सेक्सुअली हरास नहीं किया। ये बात अंडरवेयर की बात नहीं हो रही, ये सेक्सुअल हरासमेंट की बात हो रही है, जो 2 दिनों से नहीं 2 हफ्ते से चल रहा है। तो मैंने तो किसी को सेक्सुअली हरास नहीं किया 2 हफ्ते तक, मैंने किसी के ऊपर चढ़ के ये कुछ नहीं बोला। एक 5 मिनट का जो मजाक था, मुझे समझ आ गया उसी टाइम पे यहां पे मैं गलत हूं, तो मैंने वो रोक दिया, और उसके बाद कभी रिपीट नहीं हुआ। पर उसके बाद बहुत कुछ हुआ था घर के अंदर मेरे सीजन में, पर मुझे ये 7 साल बाद, 13, मतलब वो सीजन 7 था, ये सीजन 14 चल रहा है, 7 साल बाद मुझे बोलेंगे कि
तुमने भी तो यही किया था यार, मैंने तो किसी को सेक्सुअली हरास नहीं किया। सो हाउ इज दैट ओके? सो अगर लड़की के ऊपर कुछ होगा, एक मजाक भी, वो नहीं सहेंगे आवाम, पर जब लड़के के साथ होता है सेक्सुअल हरासमेंट, अरे अभिनव तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। व्हाट इज दैट अबाउट? प्रशांत, you're a man, अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता तो क्या आप सह लेते? Absolutely not, Andy. Or touching and getting close without consent is wrong. Doesn't matter आपका जेंडर क्या है, आप किसी जेंडर से आइडेंटिफाई करते भी हो कि नहीं। और इंडिया में हम बोलते हैं कि हम औरतों के लिए हम बहुत ज्यादा देवी की पूजा करते हैं लोग, एंड आई एम ऑल्सो हिंदू, तो हम उन इश्यूज पे बात करते हैं, पर एक्चुअली में हम उन इश्यूज को भी सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज हैरासमेंट के लिए हमारी जो थिंकिंग है अभी तक इट्स वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम समझे कि इट्स एक्चुअली अबाउट पावर स्ट्रक्चर, के जिसके हाथ में ज्यादा पावर है वो किसी ऐसे को हैरास करता है जिसके हाथ में कम पावर होती है। और राखी अभिनव का, you were saying that you tease her and whatnot, that was funny, but okay, some people couldn't find it funny, so आपने apologize कर दिया, which is very good, and that's how it should be. But यहाँ तो बात अंडरवेयर से आगे जा चुकी है, तो टचिंग की बात आ चुकी है, एंड शो के मेकर्स खुद इनफिडेलिटी मतलब क्या कहते हैं, इनफिडेलिटी प्रमोट कर रहे हैं कि अर्शी जब आई थी तो प्रोमो दिखाया था कि मैं अभिनव पे डोरे डालूंगी एंड व्हाट नॉट, एंड दे ट्राइड सेम विद राखी ने अभी वो ट्रैक पकड़ लिया, तो आई थिंक बाहर से कुछ तो इनकी प्लानिंग थी कि ये करेंगे जरूर। तो मतलब रुबीना अभिनव को तोड़ने की कोशिश। हाँ, पर एग्जैक्टली तो दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। हाउ कम ये किसी की नजर में नहीं आया कि एक एग्जिस्टिंग रिलेशन को somebody is trying to damage, और मेकर्स की तरफ से उनको एक ग्रीन लाइट और है हमारे देश में जहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र माना जाता है, 7 जन्मों का मतलब बंधन समझा जाता है, उसी का मजाक क्यों बना रहे हो? बिकॉज द मैन इज अ जेंटलमैन। अगर आदमी एक खूंखार आदमी होता, लड़ाकू आदमी होता या वायलेंट होता और धौंस जमाता, तो उसको बोला तो तब नहीं बोला जाता है। बट अभिनव इज द एपिटमी ऑफ मस्कुलिन सेंसिटिविटी एज टू अलीज मस्कुलिन टॉक्सिसिटी। तो इसीलिए लोग अभिनव को वीक सोचते हैं, बट वो वीक बिल्कुल नहीं है। it's a strong trait to accept things and let other people live their life the way they want to. So I really admire Abhinav, and आज तो वो बहुत ही he was looking like a राजा। वो जिस तरह अली अपने पॉइंट्स घुसा रहा था बीच में, जो पॉइंट्स पढ़ रहा था, अली अपने पॉइंट्स घुसा रहा था पूरे बीच में, तो अभिनव ने उनको पूरा इग्नोर करा। उसने कहा वो बातें हम बाद में करते हैं, एंड देन ही सेड हिज ओन थिंग्स। तो पूरा रॉयल इग्नोर किया उसने अली को, एंड ये वो जब भी अभिनव स्क्रीन पे आता है, आई रियली एडमायर कि वो दैट्स हाउ आई एस्पायर टू बी विद माय वाइफ व्हेन आई गेट मैरिड। लवली थिंग टू से। आई एम श्योर कि अभिनव को बहुत अच्छा लगेगा कभी सुनेगा। I mean, that's a lovely comment. Let's just go to this comment quickly. Yesterday's episode was triggering for the people who face sexual harassment. The way Salman Khan gaslighted Rakhi was so toxic and bad. This is exactly what we're talking about. तो ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, ये ऑडियंस, ये आवाम, ये पूरा देश देख रहा है, ये दुनिया देख रही है, और उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और ये इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है होस्ट के जरिए शो में। So what do you have to say about that, Bree? I mean, what do you think? Well, and what triggered me personally, जिसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, was कि वो राखी को कह रहे थे अभिनव को हग दो। He actually meant it. He really meant it. पर अभिनव ने जब मना किया इतनी दफा, तब उसने कहा कि ओ मत दो हग। He actually meant कि राखी उसको जाके हग करे। How stupid was that? It's like the man is so uncomfortable with this woman now. Now you want them to just kiss and make up, or hug and make up. No. Yeah. If it was a woman who's been mortally wounded from okay, one second. This is another thing. Now, if you grope someone the first time and you say sorry and then you don't do it again, so it's okay. That's the logic here. That's the logic. The logic. चलो से माफ, चलो तो कहीं से भी हाथ लगा दो, पहली बार कर लिया तो इट्स ओके, पर बाद में जब ना बोले तो उसके बाद नहीं किया। What? Right. But Andy, this is not the first time Rakhi did this. This has happened with Rahul Mahajan as well. तो ये दूसरी बार हुआ है। So yes.
ये दूसरी बार हुआ है राखी के साथ। राहुल महाजन ने इनफैक्ट मेरे ना एंडीज रॉयल्टीज का जो टॉक शो है उसमें आए थे और वहां पे उन्होंने साफ साफ बोला कि राखी सावंत चीप है। एंड यू नो मैंने भी उस टाइम पे मैंने सोचा कि ये गलत बोल रहे हैं, थोड़ा मेरे मन में था कि मैं राखी का फैन हूं, मैं राखी का फैन हूं, मैं उसका सारे वीडियोस देखता था पहले, मुझे बहुत सेल्फ कन्फेस्ड। let's all just agree that we love her, but Yeah. Love her. the point is कि basically I mean, but जो कर रही है वो गलत है, हम उसको नहीं सही कह सकते क्योंकि we love her, we like her, but I guess जो अभिनव ने बोला था कि आप यहाँ पे रहते हो, आपने 1 घंटे का एपिसोड देखा है, मैं यहाँ पे 24 घंटे रह रहा हूँ और मैं इसका ऐसा व्यवहार नहीं accept कर सकता और I can't take it. This is, and I think Rubina said she's vicious. That means something. And I could see she was being vicious in the episode I saw. So what episode is Salman Khan seeing? He's not watching. I don't think so. What Yeah, do I you don't think? think so either. He's not watching. I don't think so he's watching. I think उनको वीकेंड पे जब आते हैं कहते हैं आइए सर ये लीजिए आपको बोलना है, वो कहते हैं आपके बोल लेंगे ठीक है. And then funny thing was yesterday, I think yesterday's episode was more had more weight, ज्यादा वजन था आज के में. तो yesterday सलमान was like, अच्छा आप ये सच में सोच रही थी राखी, तब मत ऐसा करना आप फिर से. Then I was like, hold on, you didn't know this? Yeah, वही तो point है. मतलब सलमान मतलब पूरा backtrack करना पड़ा because he was like 1 second. This is what you have in your heart. This is what you're thinking. You are this person. So he's been fed some other story. It seems that he doesn't know what she's been doing. बट राखी ने बाहर इंटरव्यूज दिए थे जाने से पहले और वो रुबीना और अभिनव को सच में पसंद करती है, बोलती है. आई थिंक इसलिए भी बोलती होगी बिकॉज उसको पता है कि दे आर द टॉप 2 कंटेस्टेंट्स होपफुली, सो उनकी वजह से यू नो शी कैन आल्सो बी हाईलाइटेड एंड शी कैन आल्सो बी सीन. बट I was feeling very bad for her. Like राखी के लिए ना बुरा बहुत जल्दी लग जाता है. I don't know why, because she's from a certain background, तो बहुत बुरा लग जाता है. And रुबीना को she should just avoid her because whenever रुबीना fights with her, रुबीना की तरफ थोड़ा सा अगेंस्ट जाने लगता है लोगों का. अभी सेक्सुअल हरासमेंट में तो ऑब्वियसली राखी इज रॉन्ग, बट वो राखी रो देती है, कुछ कर देती है, तो एकदम से राखी के लिए लाइक मन में ऐसा होता है कि बेचारी, यू नो. आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं, पर ऑनेस्टली मैं भी वैसे ही था कि कोई भी राखी के अगेंस्ट कुछ करे ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो शी वाज लुकिंग वेरी प्योर एंड रियल एंड अनअडल्टरेटेड, बट नाउ शी इज अडल्टरेटेड. नाउ इट्स बीन I think she's still pure, but she doesn't know her boundaries. उसको अपनी सीमाएं रेखाएं नहीं पता, वो पता होनी चाहिए हर किसी को, because just like the way you can't murder someone on TV for, you know, votes or followers, whatnot, you can't sexually assault someone. You can't do. Let's just take this question quickly. So this Naveen Thaver, thank you for the super chat. Why the hell is Ejaz doing interviews outside? Not fair for other contestants. He shouldn't be allowed to do this. बस shoot करे अपनी. ये 4-5 चाबियां बिग बॉस ने बना के एक कुछ लोगों को दे दी हैं. जैस्मिन को दे दी है, अली को दे दी है, एजाज को भी दे दी है, तो he can do whatever he wants. वही तो, I mean, it doesn't feel fair. The problem is यहाँ पे कुछ बोला गया था विकास जाने से पहले, उन्होंने बोला था कि ये शो की जो सैंक्टिटी है, you know, उसको खराब मत करो. ये बेसिकली सैंक्टिटी तो फिर शो वालों से होती है, घर वालों से नहीं. जो सैंक्टिटी होती है that's coming from the makers, the way that they are following the rules and they are adhering to the rules because they are the judges. And if the judges are corrupt, then there is no sanctity to save. So it's like, oh my God, I should just do, oh my God, this is becoming like a political overture. Andy, I was about to say you should do a political discussion. Yes, and as I'd well. love to be in it. I would be happy to be in it too. Yes, because अभी जो हमारी country, you know, Andy what? Andy बना अर्नब. No, not Andy बना Ravish. Andy बना Ravish. Andy बना Ravish. No, how about Andy बना political? Anderson Cooper. Anderson Cooper, yeah. Anderson Cooper is fine. Yeah. Yeah, he's kind of he used to be hot. Wait, is he hot now? What do you think? Is he still hot? I guess he is still hot. Yeah. But I do enjoy Como more. I just do. Como. You know what? I'm first. Donovan just says whatever he wants. I love that. Yeah. He's just I watch more. Yeah. What do you watch more?
I was about to say I'm more into YouTube. There are a lot of YouTubers who does news shows. America के बहुत अच्छे हैं. Oh, I like More it. than I the like the news show. That's what I'm hearing. Ruchi Narula, thank you for the super chat. Fail to understand what is wrong with SK. Hug. Vikas still rubbing Rakhi on Abhinav whilst leaving. Ali and Rahul making fun of Vikas's speech. Show has gone for the dogs. Rakhi feels like garbage now. That's a bit True, strong. I agree with all of those points. But honestly, the problem is this, that I think we all agree with the point that we all fail to understand what is happening with Salman Khan. Like, I know this man, and he's pretty sensible. He knows what he's doing, and he's there, you know? So I feel that maybe he's lost interest in the show in a way, you know, to the point where he's not watching it all the time. क्योंकि जैसे आपने point out किया प्रशांत कि कोई points उनको पता ही नहीं थे. And जब पता ही नहीं थे, तो फिर then how can he comment on it? And you can't give a righteous argument to something you don't know about. So I don't know, like, I get that. And now Vikas rubbing all this, what is all that about? Like, Vikas still rubbing Rakhi he was trying to explain to her that he was explaining to them that treat her still nicely because she's a nice person. I think that's what he said before he left. What does he expect? I mean, what would they do? And Rakhi's feeling like garbage right now because she said something. उन्होंने बोला था कि देवलीना के साथ बैठी और बोली थी कि अब हमें कौन बचाएगा और कौन हमसे हमारे साथ बात करेगा or something. And I feel like she feels like she's on her own because she's lost her brother. So I don't know about that. I don't know. एंडी वो पीछे से उसको भी विकास को भी वो अच्छे से सुनाती है पीछे से उसको भी तो ब्रदर वाला आई थिंक तो राखी बहुत कान की कच्ची है बेसिकली. अच्छा, शानिया ब्रगैंजा. आई लव द नेम ब्रगैंजा. बहुत अच्छा नाम होता है, मिसेस ब्रगैंजा. वो कोई मूवी में था ना, लाइक या मिस ब्रगैंजा. आवाज मारिया ओ मारिया. एंडी कुछ होता है. मैं था अर्चना पूरन सिंह ने रोल किया था. मिसेस ब्रगैंजा. या आई रिमेंबर दैट. हाय शान. प्लॉट ट्विस्ट. What's going on with my name, guys? Plot twist. Andy uses this background because he's in quarantine and is going to enter Bigg Boss soon. Today is ये बिग बॉस देख के सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट बन चुके हैं और रिपब्लिक टीवी ज्यादा देख रहे हैं. आई थिंक तो बेसिकली अभी फिलहाल मैं लंदन में नहीं हूँ. ये बस ग्रीन स्क्रीन है. ग्रीन स्क्रीन तो है. I 100% agree it's a green screen. But I'm in my house in London in quarantine. So there is nothing I can do other than have these beautiful screens. I think Andy, she's from India, right? Because currency. तो उनको शायद पता नहीं है. मेरे को पता है क्योंकि मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ कि लंदन में स्ट्रिक्ट सिचुएशन है. ऑस्ट्रेलिया में भी है. लाइक बॉर्डर्स आर रियली क्लोज्ड और इंडिया बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इन कंट्रीज में. और इंडिया में भी ऑनेस्टली अगर मुझे बुलाते ना अभी भी कि आप आ जाओ इंडिया बिग बॉस में एंट्री मारने के लिए, मैं कभी ना जाऊं. दैट्स अ ऑनेस्ट ट्रूथ. नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बट मैंने ये देखा है एपिसोड सीजन्स में जो भी है कि जो कोई भी वहां से पहले है ना, वो एक रिश्ता बन जाता है कि ये ओरिजिनल कास्ट है सीजन की. अगर आप बाद में आते हो ना, आप जितने मर्जी फेमस हो, जितने मर्जी, जैसे राखी सावंत को ले लो, अर्शी खान को ले लो, विकास गुप्ता को, जो भी ले लो, अपने सीजन में जो करना था वो कर गए. जैसे मैंने भी किया या ना किया. कोई कहता है आपने कौन से झंडे गाड़ लिए. आई एम लाइक ग्रेट, फाइन. Top 5 is not gender, then I don't know what is. But anyway, so the point being that if I want to go again, if I want to go again, no. If I want to go again, I'll go from the beginning. So that's a unique connect with the audience from the day one. And I think that's an important thing. So don't worry. Shania Braganza. मैं नहीं आ रहा. आप फिक्र ना करें. Okay, so let's go to questions. Let's see if I can find a nice question for us to answer. What is this? Priyanka Samal. Salman Khan is behaving like an Indian television serial killer. देखो मैं नहीं बोल रहा. Ravina's English correction. And
Andy, he's behaving like a Indian TV news host जिसको मोदी जी में कोई बुराई नहीं दिखती, वो तारीफ ही करता रहता है. I Listen, love the fact that we're all on the same page politically. we are all politically on the same page because actually यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं कर रहा है. आपने ऐसे कैसे कर दिया? नहीं, I have to do this though. I have to keep doing this because have you noticed nowadays जो news में होता है ना, they just keep talking like this. They don't stand still because it's a new way of doing news. And it's like, what is that nonsense? Just stand still. वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं because they are uttering usually garbage, now distract कर रहे हैं कि बस देख लो, हम कुछ भी बोल देंगे, आप सुन ही लोगे. Views तो आ ही जाते हैं. Something's happening. It's really exciting. You must keep listening to me. Otherwise, if you don't listen to me, you're going to turn over and I won't get my TRPs and I won't get paid. Oh my God. You know, like, the news is another thing. Yeah. Exactly. Another What's thing. the last? Let's go back to the I can't see. So I can't see a last bit. What does she say? The last part, Rubina's. Rubina English correction jo kiya tha na, ke when she had said a few words, and I was just like, really? Rubina is probably one of the most intellectual people we've ever had in the house. She was school head. She was the school captain. मैं उसकी YouTube videos देखता था, वो school captain She was a school captain. But वो school captain थी, okay? Mashira C, thank you for the super chat. Can we please talk about Rahul's rapid fire marry Rubina? Did you notice a little cut in the scene? Yes, वहाँ पे cut गई थी. वहाँ पे मतलब they didn't show everything that they should have shown. There was a super edit happened there because he gets up and then he's all of a sudden somewhere else and then he's saying the question again and it's like, what happened here? What actually happened? I mean, live feed it's a main point of conversation. They won't show it in live feed because the live feed I think stops on Friday night or something. Yeah, it'll start on Sunday at 10 o'clock something. पर हाँ लाइव फीड में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही होती है, स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है कैमरा. But let's talk about it. So Rahul, we all knew this, right? Rahul basically fancies Rubina to death. Yeah, that's correct. He would love to be married to that woman, but yet he can't take a loud woman. He can't take an opinionated woman. He can't take an authoritative woman. He can't take a woman, it seems. Because all those qualities are human and they're in everybody, whether they're a man or a woman. So, I mean, what's that about? Like, why would you say marry Rubina? Like, it came out finally. Like, I think usko promo mein, I think. Would you marry Rahul? Yeah. Oh God. Even if he was the last person on earth, no. Really? Never. Kind of good looking sometimes. Honestly, yeah, he is good looking. Indian Idol first jab aaya, I actually used to like him. और जब मैं छोटी थी, I have even gone to his concert एक बार. Oh. Yeah, but after I saw him Bigg Boss में, तब मुझे नहीं उसके views नहीं पसंद आए. Plus मैंने कुछ behind the scenes clips देखे हैं. He said some very questionable things जो नहीं अच्छे. Are you talking about the Twitter thing? Here. Ruchi Narula. BB should exclusively played by Andy. One second. BB should be exclusively played by Andy, Manu, Shweta Tiwari, Samir Soni, Vikas, Shilpa, Abhinav, basically best players of previous seasons. Ruchi, that's such a lovely thing to say. Thanks. You put me in the best players. I love that. You know, I've been saying this for a while that there should be a Bigg Boss All Stars. I've been saying this again and again, and I think they keep taking that idea and they keep screwing it up. Like they put the challenges, they put the at the beginning they had the seniors. यार ऐसे करो ना, जो सबसे अच्छे contestants रह चुके हैं उनको वापस ले आओ ना, 10-15 लोगों को. Let's see what they do. Bring them from the beginning. Make an all-stars, a celebrity one, like even more celebrities because they're in a house. It would just be fun. I don't know why they're not doing that. But thank you, Ruchi. It's been filming. You made me cry. And she's from London. Hi, Andy. Yesterday, SK told Abhinav we are not saying he is using Rakhi for the show and all, but today in chat show, Ali asked the same question. Why this double standards in the same day? Because
Go for it. Go for it. Yeah, I think because Pooja, because same day episode हुआ था and it was all prepared, हम देख सकते हैं notes थे उनके पास, तो script follow हो रही थी and conversations जो naturally उनमें, you know, he got to know कि राखी सच में ये सब सोच रही है, पर episode तो करना था, but again smart thing would have been to not repeat those things, but हाँ हुई repeat को. Right, we got Pallavi Jain here, and please talk about Nikki and Rubina's bond. What do you, I'm going to say first, I think it's really cute that I think Nikki wants to be like Rubina at some level, because remember वो छोटी है, देखो मेरा nephew है, वो same age है, Nikki का same age का है, okay? So just imagine, मैंने वो बच्चा like जब से वो पैदा हुआ है उसका मैं, you know, I've taken care of him, changed his nappies, so I understand how old Nikki is. Nikki is very young. We're not getting it क्योंकि वो लगती है item bomb, but है वो बच्ची. She's, you know, she's such a little baby actually. She is a baby. क्योंकि वो उसका लुक कुछ और है, धमाका है, सब सोचते हैं कि उसका दिमाग भी वैसा होगा, but it's not. She's just a child. And very delicate. वो बड़ी बहन का जो दिख रही है उसको रूबीना में, that it's a good role model for Nikki to be, because you know रूबीना पहले काम कर चुकी है इंडस्ट्री में, वो जानती है what it's like to be an actress. She has achieved a lot. So what is there not to look up to Rubina? And why are they trying to ruin this full whatever? Like, I don't understand it. Why do they want to make this a bad situation? And now that Nikki is not in a good frame of mind, leave her alone. Okay, Prashant, you can go. I'm done with my thing. Bree, you want to go ahead? I'll speak after. I think कि Nikki बहुत ज़्यादा young है और day one से मेरी favorite रही है. Even when she used to give it back to Rubina and Abhinav, I loved her. Rubina और Nikki have been my consistent favorite. She says it how it is. जब लोग उसको कह रहे थे वो कविता की puppet है, I was like, wait until Kavita tells her something और तब she'll give it back. You know, I just know how she is. कि वो ऐसे कर लेती है. But I just genuinely feel कि Nikki थोड़ी इमेच्योर है, थोड़ी सेंसिटिव है, इमोशनल है और स्पॉन्टेनियस इमोशंस देती है, तो इसलिए शी डजंट थिंक मच, यू नो, शी जस्ट इज वेरी स्पॉन्टेनियस इन हर रिएक्शंस. तो मुझे लगता है कि दैट probably is the reason why she is trying to you know bond with Rubina, और जिस natural organic bond है कि वो समझ सके. Rubina, she thinks before she gives reactions, so maybe that's why, like, she sees Rubina as a mentor, I feel. Exactly, and she's looking up to her. Okay, there's another question here. Manya says, Andy, did you see Pritesh Nandi's tweet calling out Salman for being a misogynist? Yes. So I just opened that tweet after reading this comment. So he says, watching Bigg Boss, I find Salman Khan very tough on Rubina Dilek and Nikki Tamboli, my favorite contestants. This influences viewers, many of them Salman's blind bhakts. Come on, Salman, don't be a misogynist. Wow, that's a really big tweet out there, and it's calling Salman Khan out for his behavior. Did he tag him? Should we tag him? No, I'm just saying. He tagged him. He tagged him. Oh, he tagged him. But you know what? That's Pritish Nandi. He can do that. Let's put it that way. That's correct. I wanted to point something out when we're talking about tweets. I know that you know some people like Kamya Punjabi, but I have also noticed that is weekend ke war pe and recent events ke baad, she has not said a single thing on Twitter. Usually she has a lot of opinions, but see, selective morality यहाँ पे आती है लोगों की और दिखती है. Selective morality. Yeah. I think Kamya has a lot of blind spots. हाँ, there are blind spots. काम्या के blind spots हैं. उसको gender की conversation she doesn't get it. वो बोलती है लड़का लड़की की बात मत लाओ. I think she has these blind spots. Ill will से नहीं करती, but उसके blind spots हैं. But you should educate.
मैं एक ही सीजन में थे ना, तो काम्या और मैं हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि लड़का लड़की का मतलब नहीं हो सकता एंड ऑल। आई अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन्स, पर वो गलत इस्तेमाल कर लेती है वो चीज को। जैसे कि जब प्रेस वाले आए थे वहां पे भी ये बात हो रही थी कि राहुल आप एक स्ट्रांग लड़की को आपका सामना नहीं करते हुए देख सकते। वहां पे आई थिंक काम्या ने जंप इन किया था कि इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, दैट्स नॉट व्हाट दे आर सेइंग हियर। They're saying it's clear for us to see that you have a problem with a strong woman. We can see that. And we don't need you to tell us it's not about a girl and guy, because it is. Yeah. And she corrected incorrectly there, I feel. Gota Gangkak says, what about Abhinav explained to Rubina in the end was interesting. If she turns down her self-righteous attitude um, and adopts a winning material indeed. I don't know. I think people have to be 100% who they are, and if they have to dumb down, or if they have to like take their light and shine it less, then it's a problem for me. Because honestly, we love Rubina for who she is, because she's a true person. She's not pretending to be anyone. The day she starts pretending is the day I'll probably not like her. एग्जैक्टली एंड आई थिंक इट्स अ बर्डन के औरतों को अच्छा दिखना चाहिए ना, नेगेटिव मत देखो, डिफिकल्ट लगोगे। ये मैंने टीवी पे सुना, बहुत लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा, डिफिकल्ट लगोगे। तो आई थिंक इट्स एडिशनल प्रेशर औरतों पे थोड़ा सा, दे कांट स्पीक देयर माइंड। आई Let's थिंक ask इट्स the रॉन्ग। Aurat. There's an Aurat here, but let's ask Bree. Yeah. What do you feel? Definitely not. She should not tone it down at all. औरतों पे जो ये burden आता है कि you know you have to speak a certain way. बचपन से I remember, because I'm Gujarati, so and I talk a lot. तो मेरे घर पे you know I was always told कि you know बातें ज़्यादा कम किया करो, ये वो, you know, and then my brothers would like you know say whatever they wanted. Of course I'm a rebel, तो मैं तो बोलती थी, but you know that should be like it shouldn't be that way. You know, women are supposed to be strong. They're supposed to be opinionated just as much as men. और ये self righteousness जो है वो हर किसी में होना चाहिए, not just Rubina, even Abhinav. And Abhinav should not be policing Rubina, just as Rubina doesn't police Abhinav any, you know. तो मुझे नहीं लगता कि he shouldn't sorry, go ahead. And no, sorry, Andy, I didn't watch the last part because यहाँ पे time match नहीं करता. So what actually happened? Like this is mentioned twice. बेसिकली वो बेड में लेटे हैं और अभिनव और रुबीना की बातें अच्छी तरीके से हो रही हैं इन अ क्वाइट वॉइस, एंड दे जस्ट you know almost whispering to each other in a way, and and वो उसको समझाता है कि जैसे जो आज हुआ है वो आपके अच्छे लिए हुआ है, जो आप ज्यादातर आप बोलती हो बहुत ज्यादा, उसके ऊपर थोड़ा 30% उसको कम कर दो. It'll be better for you. And I feel that kind of self-editing at this level, when she's doing so well, she doesn't need to be told that. I don't think so, but he means well. Yeah, he he means means well. Husband and wife में ये सब बातें, I mean, in any couple, not just husband and wife, I think ये होती ही हैं. So because it's enough, it's और बात not है कि bad. हस्बैंड और वाइफ में जो होती है बातें, वो बहुत सारे बाहर वाले लोग नहीं समझ पाते. It's between two people. They have a relationship. They live together every day, not just in Bigg Boss. You can't tell people how they can behave with each other. That cannot be a situation that we can get involved with. I can't be like, I've said this on my review so many times, that ये छोटी छोटी अनबन पति पत्नी के बीच होती है, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, और वो वापस अपने आप को ठीक कर लेंगे. We can't get involved with these things. It's so silly. Yeah. Mohini Salatia. Hello, Mohini. Mohini. I love that name. I think every time she comes, yes, you do that. I always do that. I can't help it. I'm a Madhuri Dixit fan, so every time I get Mohini, it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I can't help it. I have to stop this morning. I'm sorry, but I can't help it. Hi, Andy. I don't understand. Nikki has been Battamiz from day one. At that time, she was appreciated for being bold, and now she's being with Rubina, so she's targeted for this behavior. What's your say? Tell us, guys, what is our say? Honestly, I have a lot to say about this, but मैं short रखूंगी. Last season में Siddharth Shukla was just
probably worse than Nikki, पर उसको तो नहीं बोला गया ये सारी उसको तो जिता दिया था यार. Exactly. तो मुझे तो निकी में actually winning material दिखता था और अभी भी she has a huge scope to be in top 3, top 4, top 5, you know, she's great. तो उसको क्यों ऐसे दबाया जा रहा है? I don't understand that at all. She is great. I think she's amazing. What do you think, Prashant? Do you want to answer or should I go ahead? Yeah, Andy, go ahead. I think. Okay, Kiran Gill, thank you for the super chat. And Annie, oh Andy, maybe it's Shruti. Andy, I didn't understand why Salman sir favored Rakhi on Abhinav matter. I missed the part of their conversation. I might be mistaken. नहीं, पहले किरण जो हुआ था ना, उन्होंने बोला था, he said कि चलो मान लेते हैं, हद पार हुई होगी. So that's kind of just brushing it aside. There's no reality of this is wrong, Rakhi. Don't touch a man's nada, which is very close to his private parts. And that means essentially, if you're touching the outside of his shorts at that position, you're touching his personal parts. And that is sexual harassment because he does not want you near his privates at all. So none of that was accepted. None of that was actually given to her to say, honey, you did wrong. That wasn't. It was saying, chalo maan lete hain. That means premise take it for saying. ये premise ही इतना खतरनाक है कि चलो मान लेते हैं. Whenever something starts from this, exactly. But then उसके बाद जो बोला था कि सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? Oh God. And then उसके बाद बोला कि no, there's more. I've got to finish my third point before you jump in. Yeah. The thing is, the problem is, then it said, चलो वोट करते हैं, किसको ज्यादा फायदा होता है? And then everybody except for Arshi, who kind of screwed it up a bit, said Abhinav को फायदा हो रहा है. So then it's twisted again into, तो अब सही और गलत कौन है? सारे घर वाले या Abhinav? So then it became who's wrong and right, not about the harassment, but about who's right in the situation and who's getting फायदा from this. And I loved what Abhinav said कि मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए. Just like, exactly. Can I say something, okay, Andy? I wanted to point out कि जब सोनाली फोगाट ने ये चीज की अली गोनी के साथ, ड्रामा लव एंड ऑल ऑफ दैट, तब अली गोनी को क्यों नहीं कहा कि आपको एडवांटेज हो रहा है कि वो ऐसा कर रही है? तब सोनाली फोगाट को कहा कि आप ये करने आए हो यहाँ पे, लाइक यू नो, डोंट फॉरगेट व्हाई यू केम हियर, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आई हो, वो मकसद को ना भूले आप. ये सोनाली फोगाट को रेप्रिमेंड किया, तब अली गोनी को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा. तो अभी क्यों अभिनव को है? बिकॉज अली एक छोटा बच्चा है जिसे अले ले बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो. अरे भाई, I kind of hate when he comes on screen. I mean, I know he's a good guy. He looks fine, but I just don't like his conduct at all. और ये किसको फायदा हुआ? आई थिंक नाड़े और धोती को फायदा हुआ है सबसे ज्यादा, बिकॉज नाड़ा और धोती आर बैक इनटू कॉन्वर्सेशन. लोग फिर से जानेंगे कि नाड़ा क्या होता है, बिकॉज आई थिंक मेरे से 10 years यंगर जनरेशन को नहीं पता होगा नाड़ा क्या होता है, धोती क्या होती है. सो उनको नाड़ा का पता होगा डेफिनेटली. तो नाड़ा और धोती का फायदा हुआ है. हिंदुस्तानी जो लिबास है उसका बहुत अच्छे हिंदुस्तानी करवा दिया है हमने बच्चों को. ये नाड़ा होता है, ये नल्ला होता है, ये सस्ता होता है, और ये धोती होती है, और ये फट सकती है. बिल्कुल फट सकती है. और जब धोती फटती है तो आदमी रोता है, पर जब नाड़ा को हाथ लगाते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो बेसिकली ये सिखा दिया हमने हमारे बच्चों को, हमारे देश के फ्यूचर को हमने ये सिखा दिया है. देसी पटाखा एंडी. I hope like that. When they write it's like that, I have to read it like that. So कोई विकास गुप्ता को स्टार प्लस की बहू कास्ट कर ले. इतना संस्कारी, टू मच क्रिंज. मैं बलिदान दे रहा हूँ, मैं आउट हो रहा हूँ, कोई मुझे जहर ला दो. I love it. Oh, that's so good. That's such a good. Pataka, you killed it. You killed it today.
I'm gonna have to bring you on the show. I think Desi Patnagar is gonna have to come on the show. ये competition Andy, मारो गोली. I'll just have her people come, I think. I'll Andy, just, her name is very similar to another YouTuber who does reviews. I don't know if she's that person or not. oh, maybe it is. I think she definitely is a YouTuber, so it might be the same one. I think this is another one. Rexy Rachel. Andy, actually, whom does Salman really like? Think he himself is lost to know what's happening and is getting out of control during weekend cover. Guess he himself is bored of host the show. This is like no But laughing. but Rexy, you know what, Rex? I'm not laughing. I'm not laughing at you, okay? I'll just drink some water. But Rexy, you know how you get your salary in the bank? You open it and you see you're so happy. I'm like, इस हफ्ते ये हुआ था. And जब हम amount देखते हम खुश रहते हैं. I'm like, okay, let's go forward. So, no, I think What is that? I don't think so. ऐसा कुछ नहीं है यार. Don't you dare talk about my Salu like that. Jyoti Agarwal. Andy, I love you. Thanks, Jyoti. Awesome. I have not watched Bug Boss for 2 days, but saw your review. Thank you for doing an awesome job. Also, you sound so much like Dan. Dan Levy. Who's Dan Levy? I'll Google it. You are such a Googler. We have a Googler. I am a Googler. He's a Canadian actor. Oh, So Who is he? He's a Canadian actor. He is this person. See this guy. Oh my God, he's gorgeous. He's yeah. handsome. Yeah, that's true. By the way, I think this is from isn't the show called Schitt's Creek or something? Yeah, he's with Kirsten Stewart. You know what? It's so weird, but my best friend sent me this link and said, "You know what? You are this person." And I was like, "What do you mean?" She's like, "You are this person." And I was like, "Okay, I haven't seen it yet, so obviously I better watch it." If people are saying that, that must be true. Hello, Rahul Rai. I think Rahul Rai ne mujhe ek message bheja tha because he wants to also be in the review one day. So obviously we'll try and give him a chance at some point. But let's see what he says. Andy, talk about pagodas. I mean, Jamura. I mean, tweets. Oh God, he said Jandus. Tweets. Yeah. Yeah. A lot of dirty tweets out there That's correct. Misogynistic point of view, like the only time you should slap a woman is when you're having sex. These are the kind of tweets that Rahul has put out there. He's also said stuff like, I think Salman would even sell condoms or something. Condoms. Like he's said a lot of shit out there. Like, and it's like it's legit for real. It's not like we're not making any of this up. He has his tweets out there. They're very nasty, sexually driven, a little bit perverse. And these are Rahul's own words. Any words for Rahul's tweets, Bree? Andy, this is nothing compared to what Go. Andy, this is nothing to what he was saying in the, I think, live feed or YouTube. He was talking about women's and men's genitalia similar to some River mount, something like that. You seen that? something like that. And I'm like, what is he up to? Has Disha watched this and hasn't she creeped out still? I mean, I don't know. Okay, there's one thing that creeped me out that nowhere is mentioned, and that was the time when Rahul was in. I think there was a task happening, and he was looking for the camera when they had the Chajja wala task. So Luggage. he said that मैं bag में हाथ डाल रहा हूँ ना कि उसके बदन के अंदर. And I was just like, what did he just say? And this is not going to be reprimanded. This is not going to be said that, how dare you say this and think like this. It's the thinking behind it. It's not what he's saying or what he's doing. In fact, it's actually all three. It's what he's saying, what he's doing, and what he's thinking. It's all three. Can I add in something? When it comes to Rahul, a lot of uske jo questionable moments hai, they've been edited, they've been censored. Rakhi ke questionable moments hai, and there are many, like lifting her skirt up, showing her booty. All of those have been censored out. Half the things that she says are really horrible, but wo censor out ho gaye hai, so that again false narrative banaya jaye, and then they can bash Rubina and Abhinav, eventually. You hear my mom? What?
Can you hear my mom? My mom's screaming downstairs. Well, she's not screaming. She's talking to my brother and my little niece. Can you hear her? You should tell us what has she cooked once in the end. Yes. I know what she's already cooked. What? Today is nothing. It's Sunday. She didn't cook anything. I'm sure she's not. She didn't. Kiran Gill, thank you for the super chat. Sorry, Andy, I misspelled your name. She called you Annie. Fine. She called you Annie. I'm not a fan of Abhinav, but I felt really bad for him. He was needing support at that time. So here we go. We've got Kiran Gill, who's not an Abhinav fan, okay, or a Rubinav or whatever you want to call it. But she's saying कि मुझे बुरा लगा कि, you know, okay, at that time he needed support. He doesn't need to be ridiculed. He doesn't need to be told. Because if you noticed, he's been sexually harassed. He's crying before Salman has come onto the show. But he's still being picked on at that point. Why don't you change the gear at that point when you go, oh my God, this guy is not feeling very good about this. And similarly with even Nikki, she was in the bathroom crying and then she comes back and they're doing this Gol Kappa task and chart wala whatever. And it's like, when did we become so heartless? I don't remember this. That's not the India that I like and know and love. हाँ अभी एंडी थोड़ा heartless कुछ चीजें हो रही हैं पर चली जाएंगी. चली जाएंगी कहाँ चले जाएंगी? That's optimism. Yeah. हम सब मतलब विदेश में बैठे हैं. हमें बोला जाएगा आप लोगों को क्या पता? आप लोग बाहर बैठ के हमें हमारे ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं. The word of the season. Correct. है we have I genuinely feel कि वो बाहर जाता है इंडिया को उनको डाइवर्सिटी का पता चलता है उनको पता चलता है what is the world like India से बाहर और you meet so many cultures like so many different religion people from religion तो आपको पता चलता है कि दुनिया इंडिया में जो दिखाते हैं like I'm talking about extremism वो वैसी नहीं है like radicalization जो extremist nature जो rage हो रहा है अभी इंडिया में it's terrible you know और ये अगर आप harassment को any unwelcomed advances on anybody is harassment. I'm not talking about specifically sexual harassment but I'm even any kind of harassment तो वो आप entertainment कैसे कह सकते हो? That is just wrong, especially in our country India में जहाँ पे इतना issue हो रहा है harassment में लोगों को अपनी limits नहीं पता चलती. You should not encourage that. Even if Salman Khan does have a script और वो देखते नहीं है, maybe he doesn't mean it, but he should still like at least have a responsibility as somebody who is a celebrity. I just genuinely feel that. Yes, you're absolutely right. There is an unsaid responsibility when you're a public figure. जब आप एक celebrity हो, आपका एक fan following हो, आपकी बहुत बड़ी responsibility है कि जो भी आप messages देते हो वो बिल्कुल सही हो, सबके लिए best हो और वो सुरक्षित रखें मतलब ideals को जो एक दूसरे के साथ अच्छापन या फिर मतलब you know it should be very good for people, I feel. That's why when I watch the show, I get really downhearted. I feel like we could be doing something really important with the show, showing people how we can be with each other without being nasty, without, you know, and let that be the example that we lead by and go, look, you know, at the end, you'll make Rubina win or something and say, we made a strong woman win. Look at us, we're great. But you ruined her for the past 14, 15 weeks. Correct. I mean, really? Anyway, let's take this question. Hi, Andy. Do you think makers want Nikki to get out and Ali and Rahul Ejaz to go in the finale, not Nikki? So they're running Nikki game and don't want Rubina fans to vote for her. What's your take? What's your take? Yeah, they have favorites for sure. Ejaz को तो अभी बाहर पार्क में घूमने गए अभी थोड़े दिन के बाद आएंगे तो फेवरेट्स तो हैं उनके. अली को बीच में बुला लिया, दोबारा बुला लिया और फेवरेट्स तो हैं जिनको वो चाहते हैं शो में रुबीना के साथ ताकि फेयर लगे उसकी विन, ताकि स्क्रिप्टेड ना लगे, कलर्स फेस जीता ऐसा कुछ ना लगे. तो दे हैव दैट थॉट इन द माइंड. Sayanti Chaudhary, and your review makes Heat console. Anybody know what that means? Okay, I'm going to come back to that. I feel so sad about Rubinav. They wanted so much support. It was clear that Abhinav were feeling helpless. Salman said about Abhinav, ye bhi ro diye.
I felt that Abhinav and Rubina thought that after what has happened for the last 2 weeks with Rakhi, कि सलमान आएंगे और बोलेंगे राखी को तुमने बहुत ज्यादा कर दिया. They were ready and sitting for that. Instead, they've been bashed the nines. They've been like, whatever you do, did you breathe? How dare you breathe? Did you blink? How dare you blink? Did you blink your left eye first? No, you should have done your right. Did you just pass wind? How dare you? So it's basically they can't do any right. And no matter what they do, they'll always be wrong. And I think Rubina internally understands what's going on. I can see it in her. She knows that this is a game and this is what they're doing to me. And I can't say it because if I say it, they'll do it more. She's in trouble. That's what they've proven to do. कि जब पहले हफ्ते में उन्होंने बोला था कि मेरे हस्बैंड को आप समान नहीं बोल सकते, उसके बाद तो बस has been open season. Hunting chalu. Hunting chalu. It's like Hunger Games begin. It's literally, I mean, that's the other thing. Has Bigg Boss become the modern alternative to medieval jousting? Is that what's going on right now? Is that too intelligent? Is that too much? That was too much for me. Yeah, I don't know what that is. Yeah, I feel like you're right. Andy. Is that That's what matters, okay? Andy, I think heat console. What Sayanti wants to say is that because India में सर्दी है, तो heat console means you give it's like comforting someone, giving warmth. I think that's what she means. Oh, अच्छा तो इतनी गर्मी पैदा हो गई बिना हीटर के. Because you're hot enough. I'm so hot right now because I'm wearing this like really nice jumper, which is my favorite, and मैंने इसको बहुत बार पहना है, and I think I commented on it. Yeah. Prashant, I think it means hard console. Oh, okay. Oh, makes heart console. Okay, I might have overthought it. और मैसेज करो, हमें प्लीज बताओ कि क्या मतलब था आपका? I just made a boo-boo of myself. Alicia Agnihotri, Andy, Abhinav mansplaining to Rubina Dilek and the irony. He's preaching her about not to preach. It's like weekend ka war recap for Rubina. मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि it was a bit mansplaining and she shut him down a bit and said something and he got really pissed off. I think both उनका someone's personal relationship, and I find it funny because it's really not our space to do that. I don't want to do that. I want to talk about the other contestants, like what are they talking, but they have no game. Their game is to bring down Rubina, and that's it. So our focus is only on them. And now the little bit bickering, we're talking about how they bickered. I mean, come on. Is that what you want to show? Again, Andy, thank God you remember me. Bigg Boss All Stars should be Sabhavna, Carol, Samir, Aksha, Mahek, Priya, Giselle, Kamya, Kushal, Andy, thank God मेरा नाम ले लिया. Dimpy, Rohan, Rohit, Diandra, not outside news, like nothing. No, it says like nothing. Yeah, space में. I would love that. Rohit is awesome. So funny. Dimpy, I'm not sure about, to be honest. Kamya, I've been in the house with Kamya already once, and I don't think I want to do it again. Kushal, definitely not. I don't want to be in with him again. Because remember, he's the one who hit me and left the house. Giselle, I love Giselle. She's fucking awesome. Oh, I said F word. But we're online, so it's fine. You said freaking. You didn't say. No, I'm not going to lie about it. I'll never lie. I don't lie. I just own the shit that I do. I never pretend. I just can't do that. That's why I like Rubina. I can't pretend I'm the same. Like if I do something wrong, I'll apologize for it. But I won't pretend I didn't do it. But then Rubina does that sometimes. She does. वो कभी अपनी गलती मानती नहीं है. मैंने notice किया. But it's fine. Yeah, कभी नहीं. But it's fine. Are we quiet by any chance? Of the evils, and I think Rubina is the lesser of the evils. Lesser of the evil. She's the least of the evils. She's talk about BJP and Congress. Who's the lesser of the evil now? Congress. Now, lesser of the evil is Congress. Because Congress helped. Have a chance, you guys? What? Congress will have a chance. I think जैसे ट्रम्प आया था तो ट्रम्प को बोल रहे थे कि हारेगा नहीं जीतेगा. मोदी का तो मेल ही नहीं है, वो अलग है. Yes. Modi is a very smart guy. Trump तो chaotic.
dumb, and Yeah, Trump. got places because he managed to get all the dumbbells together. Joe Biden would have won without Kamala. See, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में कांग्रेस में कौन है? राहुल है उसके। I think कि अगर कोई और होता represent करता तो शायद there would be a chance, पर अभी तो I feel like इतना rage extremism हो रहा है हमारा सारा कुछ, तो maybe not, I don't know. ठीक है, तो मैंने समझ लिया कि मुझे ना एक पॉलिटिकल न्यूज़ नाइट शो करना करना चाहिए। Please Yeah. करो। Political satire, comedy, whatever. Yeah. Okay, one second. Andy Lee, I've got a Bigg great Boss. comment that's coming. Do a Okay. he also said the same thing. Dipansh, Andy Lee, Bigg Boss, do political review every month. Would love to see it. यार every month नहीं कर सकता, every week करूंगा ना, तुम पागल हो? Andy पर इंडिया में जितने भी लोग Dipansh is कमेंट करते actually, हैं वो he's a journalist. He was on the show he's a journalist. last week. Hi, Dipansh. Narula, thank you for the super chat. Pappu as PM. That's what's gonna happen. I was waiting for it. I was waiting for it. Happen for sure, and you might But- lose Yeah, subscribers. I mean, if a Faku can become a Pappu can become too. Wow, you guys, have you noticed that we've been online for 90 minutes? Just so you Oh all, God. just so you know. And the So thing it's is, already great that we've been talking and everything, but honestly, I think we should wrap up now. And I think we've talked about Bigg Boss, and it's been really great meeting you guys. Also, I love the fact that we can do this. I love this. This is one of my favorite things to do. That's why I run the competition, because I just want to meet new people and talk about stuff. And I'm happy. And the next thing that I want to try and do, that I'm trying to organize, तो अभी से मैं ऐसे कर रहा हूँ कि एंडीज रॉयल्टीज में वेडनेसडे को रोज किलर आ रहा है, जिन्होंने वो गाना बनाया था, Rubina. So he's coming on Wednesday, and I think Shrishti Rode is also in talks with me for an interview. So वो सारे अभी Andy's Royalties talk show में आने वाले हैं. And I'm gonna try and start. This is my new project, which I'm trying to work out right now. Which is very interesting, क्योंकि आप बोल रहे हो कि political करो, ये एक नया show मैं workout कर रहा हूँ इस वक्त, and it's gonna be a late night show. Basically, it'll be interviews with celebrities, with musicians, having music that's live as well. So it's going to be a new, well, not a new concept. It is a late show. It's a late night Indian show that we haven't got yet. So I thought, let's try and see if we can do it. So I'm letting जो अभी देख रहे हैं, आपको यहाँ पे पहली बार पता चल रहा है कि ऐसा कुछ शो हो सकता है. क्या आपको ये पसंद होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि if you'll be interested in watching the late night show with Andy Kumar, which is me. And what else is happening? Well, there is, and I just did the COVID video for a COVID information video as a character, as my Sasuma character from my serial Ho To Aisa. So she's coming up with a COVID information video, so that's coming out soon too. So guys, I mean, God, wow, so much is happening. So अगर आपने एक second, एक और question ले लेते. Dating वाला. ये question बहुत जरूरी है. Have you subscribed? You can do it now. Click on the link. Yeah, I have. देखो, ये सबसे important है. If you don't subscribe, Subscribe करो, block like कर दो सब. Like करते रहना, क्योंकि like करोगे ना तो सबको पता चलता है कि अच्छा है, ठीक है? नहीं तो फिर like नहीं करोगे ना. Okay, you guys, thank you so much. You want to say anything, last thing before you go? Andy, can you say hi to Malik? He's my friend from Pakistan. He loves you. He loved you in your show as well. Oh, that's amazing. Hello, Malik. कैसे हो? पाकिस्तान में कहाँ हो आप? मुझे ये तो बताया नहीं है. He's in the United States, but वो पाकिस्तान से है. अच्छा, in the US. Oh my God, like that. Hi, Malik from the world. How are you? I'm so happy to talk to you via your friend. What's up? Okay. And any last words from you, Prashant? Andy, I want you to say hello to my brother. Me and him used to watch you from day to day, और हम we used to crack. अभी मैं थोड़े दिन पहले भी देख रहा था day to day की वीडियो जिसमें आप एक contestant से पूछ रहे हो कि how are you, and she's like just today, and I was like cracking. She was His amazing. name is Akshay. Classic. That's classic day to day. वो classic episode. Yeah, that's. वो I mean उस moment पे जब ये हो रहा था ना, क्योंकि you have to understand, मैं वहां जाता हूँ, मैं होता हूँ कि क्या मुझे, क्योंकि it's all fresh, like no one knows what's gonna happen. These are real people. So I'm just thinking, what am I gonna get next? And we have auditions for the episodes, and then that became the run up to the show. So it was like,
what's going on here? It was amazing. And then I used to meet all these amazing characters, and she was one of them. She just stood there doing this. I was like, what is she doing? And I was like, how are you? And she just couldn't understand what I was saying. And it was beautiful. I mean, there's so many moments in Dare to Date. I want to bring Dare to Date back at some point. But I think the concept is owned by Star. So it can be done by Hotstar, but I don't think they're interested right now, especially with COVID and all. But if we don't do Dare to Date, I'll do a different dating show that isn't called Dare to Date, but is a dating show. But I will do that for sure. I'm going to work on that as soon as COVID gets sorted. Okay, you guys, we really have to go now because it's been a very long time. Take care of yourselves, and thank you very much for being a part of this. And I'm so glad you won and that we've been able to talk like this. And I will keep seeing in the comments, I'm sure, right? Yes. And we're also in touch on Instagram as well, so you can obviously message me whenever. And I am going to be organizing a fandom debate. So what I wanted to do was get like maybe 2 Rubina hardcore fans and 2 maybe Rahul or other people fans. I think Rahul would be really in because his fans are pretty out there too. Maybe Ali Goni, maybe someone from the opposite team, maybe even a Rakhi Sawant hardcore fan. So I'm gonna try and find them. If you are out there, agar aap Rahul ke fan ho, Rakhi ke fan ho, Ali ke fan ho, kisi ke bhi fan ho, jo is वक्त घर के अंदर हैं, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं आपका राय क्या है. मैं एक डिबेट करूंगा जहां पे 2 तरफ से या 3 तरफ से जो मर्जी फैंडम्स आ सकते हैं और एक दूसरे को डायरेक्ट बता सकते हैं कि उनका राय क्या है, कौन सही है, कौन गलत है. So it's like the presidential debate. This will be like the Bigg Boss debate live with me, Andy Kumar. So take care, guys. See you soon in the comments. Have a great day. So what time is it in the USA now? 2:37 p.m. Oh, that's amazing. You can go have lunch now. And what about in Australia? I did everything early yesternight so that I can wake up early today. And so it's now 6:37 a.m. So we started at 5 o'clock. Oh my God. So thank you, buddy, for waking up at 4 o'clock or something. So I went to gym in the nighttime. I came back 2 o'clock. I slept and I was like, I have to wake up early. Should I watch the episode? And then you messaged me that where are you? And I was watching the episode, couldn't watch the last part. So yeah, but I had to do it because I really admire you and what you do. Thank you so much. That's the biggest compliment. I can't believe you woke up so early for me. That's so amazing. Thank you. Like super thank you. I mean, right now it is like 7:45 in the evening. So now I'm gonna have and chill. Well, actually, no, I got to edit like loads of shit. But anyway, you guys, oh my God, thank you. I'm so glad I met you guys. And who knows, one day when COVID and all this is done, we can even do face-to-face interviews and stuff. But like, I'll be in the US, I'll be in Australia, you guys might be in London, you never know. Let's keep it open and hopefully we'll go back to globalization and be global desis again. All right, take care, guys. See you. Bye. See ya, Andy. Bye.